Okay, so today we are going to start paper 41, 20 again, the latest paper, October, November, and this is extended one. तो कल हमने core किया था. तो a list of gases is shown. Answer the following questions using only the gases from the list. Each gas may be used once, more than once, or not at all. Give the name of gas that causes acid rain. That causes acid rain. So क्या कहते हो बेटा? क्या होना चाहिए? Sulfur dioxide. Sulfur dioxide, क्योंकि sulfur dioxide makes H2SO4 sulfuric acid और H2 sulfuric acid की वजह से you will be having acid rain. So this is sulfur dioxide. Forms an alkaline solution when dissolved in water. Forms an alkaline solution when dissolved in water. This is memorization. Ammonia is having alkaline nature. So ammonia is soluble in water. Ammonia, when you dissolve in water, so you will be having alkaline solution. So this is ammonia. This is ammonia. Is inert. Inert means unreactive. Inert means unreactive, which is not going to react with any element, any molecule, any compound. Unreactive. So unreactive means which is a noble gas. So xenon is a noble gas. If you see the periodic table in group 8, xenon is a noble gas. So this is xenon. Is a product of photosynthesis, also discussed in the last class. This is oxygen. Oxygen. Can form a polymer. Can form a polymer. So polymer, you know, in organic chemistry, we have discussed exactly this is ethene. Is produced in the test for nitrate ions. Is produced in the test for nitrate ions. Ammonia. Okay. बेटा अभी एक टेस्ट फॉर cations और anions और टेस्ट फॉर gases है ना. You have to memorize all this stuff. Otherwise फिर आपको मतलब जिस तरह अभी ये क्वेश्चन है, अब जिसको याद नहीं होगा तो लाइक उसको परेशानी होगी. तो इसलिए you are supposed to memorize all this stuff. Boron and aluminium are group 3 elements. Boron has only 2 naturally occurring isotopes, B10 and B11. Complete the table. Number of protons, neutrons, and number of electrons. B11. You know, if you see the periodic table, the proton number for boron is 5. So number of electrons are 5. Number of protons are 5. Number of neutrons are 11 minus 5. That is equal to 6. Simple. This is simple. The relative atomic mass of boron to one decimal place is 10.8. Determine the relative abundance of 10B present in boron. Give your answer as a percentage. Yes. Abundance you have to find out. How can we find out the abundance of an isotope? Yes? You know, this is a relationship. AR is equal to isotopic mass multiplied by its abundance, like percent abundance. Okay. So, you know, boron has 2 isotopes. AR is equal to 10.8. Isotopic mass of boron 1 is 10. Its abundance is X. This is unknown. Isotopic mass of another boron is 11 and its abundance is 100 minus X. बेटा आयशा abundance means existence. कि वो जो आइसोटोप है आपके पास उसकी परसेंटेज एग्जिस्टेंस क्या है in your environment. What is the percentage existence in your environment? So that's known as percent abundance. Like अगर आप क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन has 2 isotopes, Cl35 and Cl37.
Cl35 की जो abundance है ना वो 75% है. That's too much. 75% abundance है उसकी. So like 75% abundance means if you take 100 molecules of fluorine, so out of 100, 75 molecules will be of Cl35 and 25 molecule will be of Cl37. It means that. Okay. So, and this is divided by 100. Now, can you tell me the value of x mathematically? Okay. भाई देखो यार 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.8 into 100 is equal to 10x plus 1100 minus 11x. So 10.8 into 100 is what? 10.8 into 100 is 1080 is equal to 10x minus 11x. This is minus x plus 1100. 1080 minus 1100 is equal to x. Okay. 1080 minus 1100 is going to give you 20. So that is 20%. सही है जी, समझ आ गया? Use the relative atomic mass of boron to calculate the number of atoms in 0.57540 gram of boron. बेटा calculate the number of atoms. अब atoms का फॉर्मूला क्या होता है भाई? atoms का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना number of atoms is equal to mole multiply by Avogadro's number, that is 6.02 exponent 23. Mole is equal to mass over molecular mass or atomic mass into Avogadro's number, that is 6.02 exponent 23 represented by an A. 6.02 exponent 23. Okay, mass is given to you, that is 0.540 divided by atomic mass of boron. Atomic mass of boron is 10.8. ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया हुआ था, अगर आपको याद हो ये ना. This is 10.8. Okay, this is 10.8. So it's going to give us 0.054. So जब मैं इसको एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स. सिंपल. दैट वुड बी दिस. ओके. सही हो गया जी, सेट हो गया. फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, फॉर्मूले लाजमी याद होने चाहिए. फॉर्मूले याद करना इज मैंडेटरी. So shouldn't it be to the power of 23? 3.01. यही आया आंसर कैलकुलेटर से, देखो जरा यही आ रहा है. I got to the power of 23. पूरा बताइएगा आंसर. 30.1 तो नहीं आ रहा. 30.1 एक्सपोनेंट 23. ये जरा देखिएगा, सीधा कैलकुलेटर. I got with the power of 22. ओके, 22 सही है फिर. ओके. नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. ओर ऑफ एल्यूमिनियम कल वाले पेपर में आया था. नेम द ओर ऑफ आयरन, मैंने कहा था हेमाटाइट, आज है बॉक्साइट. और बच्चे ने रिप्लाई किया था बॉक्साइट. वो बच्चा नजर नहीं आ रहा आज. उसको आज कहना चाहिए था बॉक्साइट. बॉक्साइट. The electrolyte contains aluminum oxide like Al2O3 and one other substance. Name the other substance and explain why it is used. अगर आप कोई बेटा, मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी बता दूं आपको. देखो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, एग्जैक्टली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराना इज अ पीस ऑफ आर्ट. व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. पहली बात तो ये है. और कोई भी चीज अगर इनसॉल्युबल इन वाटर हो तो हाउ कैन यू इलेक्ट्रोलाइज इट?
क्योंकि ये सॉलिड में बैड कंडक्टर होता है। जब ये सॉलिड में बैड कंडक्टर होता है तो फिर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। If this is insoluble in water, so you can melt it, but the problem is its melting point is very high. तो ये तो मसले मसाइल बहुत है इसके साथ। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, to lower the melting point of aluminium oxide, we add cryolite. Cryolite is a substance which lowers the melting point of an ore so that you can melt it easily and then you can electrolyze. तो इसमें जो अदर सब्सटेंस है वो हम डालते हैं क्या, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इसलिए डालते हैं टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। Sir, can I say to lower the operating temperature? Operating temperature, but if your term is matching with the marking scheme, like not 100%, so it would be better. I don't know what's written in the marking scheme. I think so this word मतलब ये नहीं होगा, operating temperature नहीं होगा। Aluminum oxide has high MP, so to lower melting point of bauxite, this is used. Or you can say to lower the melting point. Simple. Half equation for the reaction at cathode. Cathode is negative. कैथोड इज नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज किस पर है, एल्यूमिनियम पर, क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ मेटल। मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, मेटल ऑलवेज फॉर्म्स अ कैटायन। सो व्हेन Al3 plus goes to cathode, it gains 3 electron, it forms aluminium solid। Simple, this is cathode equation। Why the anodes need frequent replacement? क्योंकि anode is made of graphite, so graphite means carbon, and when oxygen goes towards Sir? anode, they form yes. So what is meant by ionic half equation? Sorry? Sir, what do you mean by half equation? Ionic half equation. Half equation means that in electrolysis, we have two types of equation. The first equation is at cathode and another equation is at anode. So if you see overall equation, like the equation that is the sum of cathode and anode, that is called overall equation. But if we have only cathode equation, only anode equation, so this equation is known as the half equation. And ionic means the ions are involved, the cation is involved, the anion is involved. This is not like the full equation, like जनरली हमारे पास जो होती हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली उसमें आयंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जब ब्रेक डाउन होता है आयंस आर फॉर्म। एंड अगर कैट आयन है तो वो जाएगा कैथोड पर, और अगर एन आयन है तो वो जाएगा एनोड पर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं आयोनिक इक्वेशन, एंड हाफ मींस ओनली कैथोड इक्वेशन। ओके Okay, sir. तो एनोड कह रहे हैं इफ ग्रेफाइट इज इनर्ट हाउ कैन यू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ग्रेफाइट बेटा असल में ग्रेफाइट इज इनर्ट, बट द थिंग इज बेसिकली दिस इज कार्बन। तो कार्बन के पास एक हायर एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कार्बन के पास स्पेसिफिकली एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दिस इज द रीजन कार्बन इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस, इट विल बी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। तो आपका जो ऑक्सीजन कार्बन को लेकर जा रहा है, तुम्हारा जो एनोड का साइज है वो छोटा होता रहेगा, कम होता रहेगा। ड्यू टू दिस you have to replace anode frequently, you have to replace anode frequently। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि सबसे पहले तो आप ये लिखो कि एनोड जो है वो मेड ऑफ कार्बन, इट रिएक्ट्स विद कार्बन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और बस ये बहुत है, एनफ है इतना लिखना। तो अब मैं इसको लिखता हूं कि आपका जो एनोड made of carbon
Okay. Yes. Suggest state two physical properties of aluminum that make it suitable for use in overhead electrical cables. देखो, एक तो ये गुड कंडक्टर होता है, एक तो ये गुड कंडक्टर होता है, तभी इसको हम केबल्स में यूज करते हैं. Is ductile गुड and कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डक्टाइल, तो मतलब डक्टाइल इज नॉट अ रीजन कि वी आर यूजिंग एज ओवरहेड केबल्स. फिर तो हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं. बट ओवरहेड केबल्स बेसिकली सरफेस से, सरफेस ऑफ अर्थ से, बेस लाइन से ये काफी हाइट पर होती हैं ओवरहेड केबल्स. और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती हैं ये. लाइक थोड़ी सी कर्व सरफेस होती है, लाइक अ पैराबोला, लाइक दिस. तो ड्यू टू लो डेंसिटी, अगर ये हायर डेंसिटी होती तो ये चांस है कि ये क्या करेगी, टूट के गिर जाएगी ये तार. लेकिन ऐसा नहीं होता है. लो डेंसिटी होती है, लाइटर वेट होती है, बड़ी आसानी के साथ स्टे करती है, स्टेबल रहती है. अपेरेंट अनरिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. देखो, एल्यूमिनियम जो है वो अनरिएक्टिव होता है, बट अपेरेंटली वेदर, वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में दिस इज रिएक्टिव, लेकिन ये रिएक्शन करता नहीं है ड्यू टू इट्स लेयर ऑफ ऑक्साइड. ये मैं हमने मेटल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, और ऑल्सो एसिड बेस वाले चैप्टर का भी टॉपिक है ये. तो बेसिकली होता ये है कि लेट्स सपोज दिस इज योर एल्यूमिनियम मेटल, और इसके ऊपर ये एक ऑक्साइड ऑफ लेयर है, लाइक दिस, लाइक दिस. ये है ऑक्साइड्स लेयर. So when oxygen comes into contact with aluminum, exactly, this layer of oxide doesn't let it immediately react. Exactly, good. तो इसलिए, तो वो कह रहा है कि भाई अपेरेंट अनरिएक्टिविटी क्यों है, तो मैं लिखूंगा कि ड्यू टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर. एंड जो ऑक्साइड की लेयर होती है ना बेटा, वो अनरिएक्टिव होती है. लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड that is unreactive. Aluminium reacts with fluorine to form aluminium fluoride, an ionic compound. Okay. Write the symbol equation for this reaction. तो उन्होंने तो सारा कुछ खुद ही बता दिया, सब कुछ तो खुद बता दिया. अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चे इतना परेशान होते हैं, सर हमें इक्वेशन कैसे बनेगी, हम कैसे करेंगे. अबे कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है यार. मतलब आपको क्या करना है, दिस इज योर एल्यूमिनियम, यू आर गोइंग टू रिएक्ट विद फ्लोरीन. हाँ, ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन इज अ डायटोमिक गैस. देन दे आर गोइंग टू रिएक्ट टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस. अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो, इक्वेशन को बैलेंस कर लो. वालेकुम सलाम. This is 2, this is 3, this is 2. Now this is balanced equation. Complete figure 2.2. बेसिकली ये आयोनिक सॉलिड है, तो आयोनिक सॉलिड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनवा रहे हैं आपसे. एल्यूमिनियम हैज +3 चार्ज एंड फ्लोराइड हैज -1 चार्ज. ओके, 3 प्लस एंड 1 माइनस. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है चार्ज लिखने का, 3 प्लस, नॉट +3. स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये. सो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर इज 13. 13 मीन्स वैलेंस शेल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे तो +3 चार्ज है. 3 इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हो गया. तो जब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, तो हम वो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे. फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर इज 9. वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो एक इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिया, सो दिस इज अगेन 8. तो मैं इसको क्रॉस कह दूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए थोड़ा सा. तो ये भी सारे क्रॉस है. Order of reactivity can be determined. Yes, good. Okay. Order of reactivity can be determined by displacement reactions. A student investigates
the reactivities of four metals by carrying out series of experiments. Each of the metals, lead, manganese, silver, and zinc, are added separately to aqueous metal nitrates of the other metals. So complete the table and place the all four metals in their order of reactivity. Okay. चलो भाई, अब बेटा मैंगनीज ने रिएक्शन कर लिया लेड नाइट्रेट के साथ, यानी कि Mn ने रिएक्शन करा लेड नाइट्रेट के साथ. वी कैन प्रिडिक्ट Mn is more reactive than lead through this statement, right? Okay, मैं इसको इसी के सामने लिख देता हूँ ताकि कंपैरिजन कराना आसान हो जाए. Okay, then मैंगनीज नाइट्रेट ने किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं किया. तो मतलब ये जितने भी मेटल है सारे नालायक हैं, ये मैंगनीज से कम रिएक्टिव है. तभी तो मैंगनीज को रिप्लेस नहीं कर पा रहे. क्या कहते हो? और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, मैंगनीज, और ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट ने लेड के साथ रिएक्शन कर लिया, यानी कि AgNO3 तो मतलब कि Pb इज मोर रिएक्टिव देन Ag. तभी Pb ने Ag को रिप्लेस कर दिया. और सिल्वर नाइट्रेट का यस मदार का AgNO3 ने Mn के साथ रिएक्ट कर लिया, which means that Mn is also more reactive than silver. ओके, लेकिन ऊपर देखो तो Mn Pb से भी ज्यादा रिएक्टिव है. इस इक्वेशन में देखो अगर आप. ओके, जिंक नाइट्रेट किसी के साथ भी नहीं कर रहा रिएक्शन. तो अब आपको ये चीज कंसीडर करते हुए यू हैव टू फॉर्म द रिएक्टिविटी सीरीज. तो सबसे पहले मुझे क्या रखना चाहिए? क्या कहते हो? Manganese. मैंगनीज, देन Lead. देन Silver and zinc. एग्जैक्टली. अच्छा, इन्होंने एक और भी बात पूछी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स तो टिक एंड नहीं अकर्स तो क्रॉस. तो अब हम देख लेते हैं बेटा इसमें हमें क्या Yes. करना है. इसमें ये जो More reactive than zinc. सॉरी How is silver more reactive than So zinc? how is silver more reactive than zinc? सॉरी सिल्वर तो बिल्कुल लास्ट में होता है. रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो, पोटेशियम, देन सोडियम, देन खाला, नसीमा का, मंगेतर, अली, जैन, पप्पू, हैदराबाद से, कॉपर, सिल्वर. हाँ, सिल्वर आखिर में होता है. सिल्वर तो आखिर में होता है बेटा. तो यहाँ आना चाहिए क्या? जिंक. और यहाँ आना चाहिए एज. यहाँ पे क्या आएगा इनमें? टिक और क्रॉस. इसमें एन, इसमें Cross. इसमें क्या कहते हो बेटा? They're in the lead सर and कैसे पता चला मैं कि मैंगनीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि तुम लेट आए हो. भाई अब्दुल्ला, देखो रिएक्शन हो गया. कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का मैंगनीज से रिएक्शन हो गया. टिक डाला हुआ है उसने. टिक. टिक मींस व्हाट? कि इस मैंगनीज ने लेड को डिस्प्लेस कर दिया. तो मतलब मैंगनीज इज मोर रिएक्टिव. तभी तो रिएक्शन हो गया. तो इसलिए हमने यहाँ से ये प्रेडिक्ट कर लिया. अच्छा, अब एक चीज और देखनी है हमें यहाँ पर कि इज दिस क्रॉस और टिक? सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन लेड और नो? तो नो. क्या करना चाहिए मुझे? क्रॉस. क्रॉस. एंड व्हाट अबाउट जिंक? Zinc is नो, आई more थिंक reactive जिंक than इज lead मोर or not? रिएक्टिव. Yes, Exactly. tick. So tick. जिंक इज मोर. Tick. Exactly. What about lead?
What about lead? Cross. एक और cross. Lead cross, because lead is no less reactive than manganese. And what about this? Silver is more reactive than manganese or no? No. Sir. Cross. No, cross. Good, 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 good. Okay, then Cross. what about this? Zinc is more reactive than manganese or not? No, sir. Zinc. बेटा जिंक रिएक्टिव होता है मैंगनीज से. Zinc is more reactive than manganese. This is stick. Zinc is more reactive than manganese, remember. अच्छा, Sir, you memorized this from the reactivity series, बोलो right? अब्दुल्ला. ये reactivity series में मैंगनीज नहीं आता ना, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज तो ऑब्वियसली तुम लोगों को पता होनी चाहिए ना. अब मैंगनीज बेटा इन्होंने जो है वो होता नहीं है, लेकिन हम रिएक्शन से आइडिया लगा रहे हैं ना कि मैंगनीज ने लेड को क्रॉस कर दिया. मैंगनीज ने लेड को क्रॉस कर दिया. बात समझ रहे हो? हम यूं आइडिया लगा रहे हैं बेसिकली इसको देखकर. ये कह रहा है आई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिएक्टिविटी ऑफ 4 metals बाय कैरिंग एक्सपेरिमेंट्स. ईच ऑफ द मेटल्स लेड मैंगनीज सिल्वर एंड जिंक आर एडेड. कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अलीजा कह रही है. बोलो अलीजा. Sir, are you saying that zinc is more reactive than manganese? एग्जैक्टली यस. Sir, Then but how is it the higher in the question. reactive table? I don't understand. Yes, sir, but manganese is सही है. अब ये मैंने जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से ऊपर सिर्फ ये वाले लोग हैं. ओनली दीज पीपल आर प्रेजेंट. तो जिंक के नीचे होगा जो भी होगा. इज दिस अंडरस्टूड? दैट जो भी होगा जिंक से नीचे होगा. एम आई राइट? एंड जैसे yes. जैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है. तो 100% understood that manganese is not above the zinc. If this would be present, so it will be below the zinc. Means that zinc is more reactive than manganese. Am I right? right. Okay. Exactly. तो इस तरह से आप बेटा इसको करते हो इन क्वेश्चंस को ना. तो इसी मैंने टिक लगाया उसमें. Now, is this tick or cross? Cross. Like silver and zinc. So obviously this is cross. आइए जरा. Suggest why the metal nitrates and not the metal sulfates of these 4 metals are used as the aqueous solutions. Good question. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए exactly you must know the solubility rules बेटा. All nitrates are soluble. All nitrates are soluble. So इसको हम soluble होगा तो रिएक्शन होगा ना, बड़ी आसानी के साथ सॉल्यूशन में रिएक्शन हो जाते हैं. तो इसलिए हम नाइट्रेट्स ले रहे हैं क्योंकि बेटा जो लेड का सल्फेट है ना, लेड सल्फेट इज इनसॉल्युबल. तो इनसॉल्युबल मीन सॉलिड. और ये जो मेटल है ये भी सॉलिड्स है. तो सॉलिड सॉलिड से कैसे रिएक्शन करेगा? तो हम इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. Write the symbol equation for the reaction between zinc and silver nitrate. Good. This is zinc. This is silver nitrate. Zinc is more reactive than silver. So zinc nitrate and silver. Sir, how Balance did you get chemical the 2? equation. So this is 2. Beta, the valency of zinc is 2. You know, the common oxidation number of zinc is 2. The common charge on zinc is +2. Okay. The reactivity of group 6, 7 elements can be investigated experimentally as student bubbles chlorine gas into KBr. Potassium bromide is KBr. Describe the color change seen in the test tube. तो पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के बता दूं ताकि आपको कलर चेंज आसानी से समझ आ जाए.
Cl2 when reacts with KBr, it's going to form KCl and Br2. In the reactant, you have chlorine gas. In the product, you have bromine, liquid. तो आपको कलर तो पता है क्लोरीन का कलर तो आपको पता है क्या होता है Yellowish है green. ना? तो क्लोरीन गैस इज बबल्ड, तो चूंकि वो गैसियस फॉर्म में है तो आप सॉल्यूशन का कलर देखो क्या चेंज आ रहा है. कैन यू टेल मी द कलर ऑफ KBr? यस, I think it's brown. I think brown. दिस इज कलरलेस. Colorless. All solutions of potassium and sodiums are colorless. Okay, then this is bromine, which is orange. Bromine is liquid na beta. This is gas. This is liquid. So we will see the color of the solution from colorless to orange. When bromine is in liquid, so this is orange. Complete the ionic equation. So I am supposed to write, इसी को मैं आपको बता दूं कैसे बनेगी. आई बनेगी तो क्लोरीन गैस तो हम ब्रेक डाउन नहीं करते ना उसे, क्योंकि एक्वस एक्वस वालों को ब्रेक डाउन करते हैं. तो दिस इज Cl माइनस, दिस इज Br2. So, sir, all There's potassium करना था and तो ये sodium solutions are two Cl colorless, minus. right? यस, There are two Cl minus. 2 Cl minus. This is balanced. And all are aqueous. This is liquid. Or you can say aqueous. Soluble in water. The reactivity trend seen in ClBr and I applies to all the elements in group 7. Use the periodic table to identify the group 17 elements which cannot displace any other group 7 elements. क्या कहते हो बेटा, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ग्रुप 7 में जो सबसे, देखो ग्रुप 7 में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. एस्टेटीन के नीचे IDK, मुझे नहीं पता कौन है, देख लेता हूँ नीचे कौन है. This is the periodic table. If you can see this, you have fluorine, chlorine, bromine, iodine, So, astatine. This is tennessine. पता नहीं क्या है, tennessine. Exactly. So ये वो मेटल है जो सबसे, यानी कि ये वो एलिमेंट है जो सबसे नालायक है, नालायक. I am supposed to write TS. Okay. Aqueous hydrogen peroxide slowly forms water and oxygen at room temperature and pressure. This reaction is catalyzed by manganese oxide. State the test for oxygen gap. देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ऑक्सीजन गैस का टेस्ट हम कैसे करते हैं? Relights a glowing splinter. Yes, exactly. Relights a glowing splinter. Exactly. तो आप glowing splint लो और it relights. Simple. So where can I learn this tests and observations? बेटा ये आपके जो स्पेसिफिक IGCSE का जो डॉक्यूमेंट है ना 0620 या 5070, वहां पे आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा. लास्ट पेजेस पे लिखे हुए होते हैं ये सारे के सारे. एल्स आफ्टर द क्लास आई विल बी सेंडिंग यू द ऑल द स्टफ इन वन पेज. सारे टेस्ट हैं आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, ये फंडामेंटल केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे सारे. Identification of gases के chapter. एग्जैक्टली यस. अलग से चैप्टर तो खैर वो नहीं है, लेकिन ये है कि मिल जाएगा आपको, नॉर्मली मिल जाएगा यार, कहीं से भी आप सेव माई एग्जाम से देख लो, बिल्कुल जनरल सी चीज है. Yes, this reaction, a student investigates the rate of formation of oxygen gas when manganese oxide is added to aqueous hydrogen peroxide. The volume of oxygen gas formed is measured at regular time intervals at room temperature, pressure. The results are plotted onto the graph in figure 4.1. State how the graph in figure 4.1 shows the rate of reaction at time t2 is lower than at time t1. Yes,
भाई कह रहा है कि दिस इज लोअर टाइम, दिस इज हायर टाइम, व्हाई? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन में आपको पता है ना कि कम टाइम जब होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है। यू ऑल नो वेरी वेल कि जब टाइम इज लोअर मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। भाई कम टाइम में इतना वॉल्यूम बन गया, कम टाइम में इतना वॉल्यूम बन गया। भाई मैंने जब अलीजा को कहा बिरयानी पकाओ, अलीजा ने 10 मिनट में पका ली। जब मैंने आयशा को कहा बिरयानी पकाओ, आयशा ने 35 मिनट लगा दिए। आयशा का रेट ऑफ रिएक्शन कम है, अलीजा का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। बात समझ लो? तो बेसिकली व्हेन द टाइम इज लोअर सो द रेट इज हायर। तो अब वो T1 और T2 की बात कर रहा है बेटा, कह रहा है the rate of reaction at time T2 is lower than at time T. State how the graph in figure 4.1 shows. तो आप देख रहे हैं ना बेटा, y एक्सिस पे यू हैव वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यू हैव वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा जब ये यहाँ आपका जो T2 है ना, जो आपका T2 है ना, ये लेस स्टीपर है ग्राफ। लेस स्टीपर है, मोर स्टीपर है, क्या कहोगे? हाँ भाई अब्दुल्ला, कैसा हो? क्या कहते हो? Sir, एक T2 ये is less पोजीशन है steeper, so therefore एंड दिस it इज has a lower rate T1. of reaction. Exactly. This has the lower gradient. Higher gradient. Explain using collision theory why the rate of reaction at time T2 is lower than at time T1. तो आपको तो पता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है आपके पास y एक्सिस पर। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम जब कम होता है, बात समझ रहे हो, ये The कम particles are वॉल्यूम closer है, ये together ज्यादा and वॉल्यूम है। therefore they have more collision हाँ। frequency, right? And they collide more often. एग्जैक्टली। तो बेटा आप कहोगे कि जो टाइम लोअर एंड देन टाइम T1 है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ H2O2 डिक्रीज हो रहा है। जब अमाउंट ऑफ H2O2 डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन दिस इज द रीजन। ओके, यस। On figure 4.1, sketch the graph obtained when the experiment is repeated using aqueous hydrogen peroxide at higher temperature. At higher temperature. Yes. What am I supposed to draw? Higher temperature. A more steeper graph. Like this? Yes. Exactly. ऐसे नहीं बनाना भाई। ओके, चलो। ओ, मोल्स आ गया भाई, मोल्स आ गया, मोल्स आ गया, मोल्स आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन गैस का क्या दिया हुआ है इन्होंने? ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। So mole is equal Mass to over volume, right? volume upon 24 decimeter cube or 24,000 centimeter cube. Volume is given to you, that is 72. This is the 24,000.
आंसर बताइएगा जरा, क्या आ रहा है? Sir, isn't it 24? 24 dm cube, but the volume is given, that is in cm cube. Okay. It's 0.003. 0.003. Determine the number of moles of hydrogen peroxide which reacts. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल बताने. मोल रेशो इज 1:1. मोल रेशो इज 1:1. So what's perox? Peroxide is H2O2. Oxygen and H2O2. 1:2. If we have this much moles of oxygen, this would be X. So cross multiply. Simple. Then they are saying concentration in mole per dm cube. Dm cube bole to 1000 cm cube. So this is the moles of oxygen. I will be using this moles of hydrogen peroxide. Concentration is equal to mole upon volume. Mole is 0.0006. 006. अब्दुल्ला क्या सर, क्या हुआ? अब्दुल्ला क्या सर, Sorry, क्या कह रहे कुछ नहीं सर, वो मैंने गलती से क्वेश्चन मार्क को प्रेस कर दिया. हो? ओके ओके. अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये देखिएगा जरा. 20 cm क्यूब. इस 20 को पहले तुम डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लो, डिवाइड कर लो 1000 से. आंसर बताइएगा जरा बेटा, क्या आ रहा है? 0.02. 0.02. दोबारा करो जरा. 0.3. यस. अब बताना है कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब. दिस इज मोल पर डीएम क्यूब. 0.3 is mole per dm. Sir, Mole could you per explain dm. to me how you did the Yes, previous concentration is question? amount of substance. आयशा, ये वाला. जी सर, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है जी. देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है हाइड्रोजन पर की. हाइड्रोजन पर के मुझे मोल दिया हुआ है, जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था. अब मुझे चाहिए हाइड्रोजन पर का वॉल्यूम. वो मैंने देखा यहाँ से, ये मुझे हाइड्रोजन पर का वॉल्यूम दिया हुआ था इन लोगों ने. तो हाइड्रोजन पर के वॉल्यूम को पहले मैंने डीएम क्यूब में चेंज किया, 1000 से डिवाइड करवा कर. फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड कराया, तो मेरे पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई इन मोल पर डीएम क्यूब. ओके. ओके सर. सही हो गया. इसकी हाँ. अब मुझे बेटा ये वॉल्यूम चाहिए 20 नहीं थी? ग्राम्स पर डीएम क्यूब. बेटा वो ऑक्सीजन का था, ये देखो जरा. अरे हाँ, 20 तो रखा है मैंने. हाँ सही तो है, 20 यस, 20 तो रखा है. 72 तो टाइम्स ऑक्सीजन 10 to the का power of था minus वॉल्यूम, 3 ये थी. देखो. एग्जैक्टली -3 किया है, ताकि वो डीएम क्यूब में चेंज हो जाए. ओके ओके. अब मुझे, व्हाट इज आरटीपी? आयशा, आरटीपी मींस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अच्छा, डीएम क्यूब को तो हटा दो, सेम है. बस आप किसी भी तरह से मोल को ग्राम में चेंज कर लो. एंड मोल को ग्राम में चेंज कैसे करते हैं हम? उसको एमआर से डिवाइड करा दो.
हाइड्रोजन परऑक्साइड का एमआर, H2O2 का एमआर, H2O2 का एमआर कितना होता है? हाइड्रोजन इज 2 and oxygen is 32, 34. 0.3 divided by 34 would be equal to what? 10.2. This is your final answer. Suggest the identity of one other metal oxide which also catalyzes this reaction. अब ये भी मेमोराइजेशन है, ये नहीं पता होगा आंसर नहीं कर पाओगे, कोई लॉजिक नहीं, मतलब पता होनी चाहिए चीजें। कह रहा है कि कोई और ऐसा ऑक्साइड बताओ जो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर दे, किस रिएक्शन को? इस रिएक्शन को कैटलाइज कर दे। तो उसने खुद भी तुम्हें कह दिया कि मेटल का ऑक्साइड है, वन अदर मेटल का ऑक्साइड। तो एनी ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, if you remember, transition metals are the metals which can be used as चलो भाई सिंपल रिएक्शन आ गया यार, सन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो फीचर्स, एक तो ये होता है कि बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, एक तो ये फीचर है इसका कि रेट सेम होता है, और दूसरा कंसंट्रेशन का डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होता, कंसंट्रेशन विल रिमेन द सेम, कंसंट्रेशन विल रिमेन द सेम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to So the can we rate say of that the process is backward reaction. continuous? कंटिन्यूअस तो इसको आप एज अ फीचर, बिल्कुल सही बात है। concentration will not change, concentrations of reactant and products are fixed. ओके, तो बेटा अब ये क्वेश्चन रह गया है, ये तो फिर अभी नहीं हो पाएगा। कितना रहता है पेपर? थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मेरी क्लास है अभी